Welcome students in my biology class. Today we start a next chapter, that is the ecosystem. Okay, this is the very important topic for the competitive examinations of such as NEETs. Okay, so first thing, what is the ecosystem? Ecosystem क्या है? तो normally you see everywhere or surrounding us there are different components are present such as biotic and abiotic components. This is the part of components of ecosystems. So through this video you understand about the what is the components of ecosystems, how can they are correlate with the biotic and abiotic components. Okay, so first we define the ecosystems. What is the ecosystems? Ecosystem is a self-regulated and self-sustaining structural and functional unit of landscape consisting of a community of living beings and its physical environment, both interacting and exchanging material between them. Okay, so what is the ecosystems? In simple way we discuss about them. We define them that an ecosystem is the relationship between biotic abiotic with the environment. मीन्स इन्वायरमेंट के साथ बायोटिक और एबायोटिक का क्या रिलेशनशिप है, इसके स्टडी को हम कहते हैं इकोसिस्टम्स. Another way we also discuss here, it is the functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with their surrounding physical environment. ठीक है, we discuss here लिविंग थिंग्स के जो सराउंडिंग प्रेजेंट है मीन्स फिजिकली इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, इन विच देयर इज द नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट, दे आर इंटरकनेक्ट टू ईच अदर्स. दिस इज नोन एज द इकोसिस्टम्स. The term ecosystem was first coined by A.G. Tinsley in 1935 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा. ओके, ecosystem is an open system. It receives input in the form of solar energy and inorganic nutrients which results in the productivity or synthesis of food. ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम है इन विच दैट इज द रिसीव द एनर्जी या इंटर द एनर्जी इनटू द इकोसिस्टम थ्रू द सोलर एनर्जी and inorganic nutrients which are present in soils which result in the formation of foods. So what is the ecosystem? That is clear? Okay. Ecosystem structure and functional की बात करें. What is the structure of ecosystems? Ecosystem is considered as an interactive systems where biotic and abiotic components interact with each other via energy exchange and flow of nutrients. And ecosystems can be either natural or artificial. ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या होता है? दैट इंटरेक्टिव सिस्टम्स होता है इन विच दैट इज बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर्स वाया एनर्जी एक्सचेंज, और इसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है एंड फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट दैट इज आल्सो फ्लो इनसाइड देम इन इकोसिस्टम्स.
इकोसिस्टम की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर प्रेजेंट, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। नेचुरल इकोसिस्टम क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम विच आर प्रेजेंट इन द नेचर, जो नेचर के थ्रू बने हुए हैं, पहले से प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। एंड सेकेंड वन दैट इज द मैन मेड, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है, जैसे एक्वेरियम है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। क्लियर? तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल इकोसिस्टम। व्हाट इज द नेचुरल इकोसिस्टम? These are capable of maintaining and operating themselves without the interference of man। ठीक है, जहाँ पर इंटरफेरेंस मैन का या ह्यूमन बीइंग का नहीं होता। दे आर फर्दर क्लासिफाइड, जो नेचुरल इकोसिस्टम है दैट इज आल्सो अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, जस्ट लाइक यू सी हियर। वन इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, another is the aquatic ecosystems। terrestrial ecosystem means the ecosystem which are present on the earth surface, just like इसमें आपका forest है, forest ecosystems, grassland ecosystems, desert ecosystem, this is the terrestrial ecosystem systems which are present in the nature, that is clear। second that is the aquatic ecosystems, aquatic habitat base पर जो present होते हैं, वहाँ पर जो आपका बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसको हम एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। इन एक्वाटिक सिस्टम दैट इज आल्सो divided into two parts। one is the freshwater ecosystems, means which are present in the freshwater organisms, plant, animals, and biotic and abiotic which are present in the freshwater ecosystems। and second one is the saltwater ecosystems। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का सम एग्जांपल दैट इज सच लाइक ए पॉन्ड्स, लैक्स, स्ट्रीम्स, ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम्स, लेक इकोसिस्टम, स्ट्रीम इकोसिस्टम्स, दिस इज द नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। ओके, एंड सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम सम एग्जांपल दैट इज द वेटलैंड इकोसिस्टम्स, estuaries, marine ecosystems where the water is salty and which biotic component present in salty water। So that is clear। different type of ecosystems different type of natural ecosystems clear हो गए। and artificial ecosystem क्या था? these are the maintained and manipulated by man for different purposes, for example क्रॉपलैंड, एक्वेरियम, एट्सेट्रा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग अपने पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। तो क्रॉपलैंड दैट इज द, ये आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो जाएगा। एक्वेरियम दैट इज फिश के लिए यूज़ करते हैं या एक्वाटिक एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं विच आर यूज फॉर एज ए फूड, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल्स, दोनों आर्टिफिशियल है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब कंपोनेंट की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में एन इकोसिस्टम हैज़ ओनली टू मेजर कंपोनेंट्स, इसमें दो मेजर कंपोनेंट होता है, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, अनदर इज द बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, तो इन्वायरमेंट में जो नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है विच आर प्रेजेंट अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, जस्ट लाइक एयर, वाटर, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशंस, सॉइल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एटसेट्रा। ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, विच आर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम्स। एंड एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन बोथ कंडीशन, मीन्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज वेल एज द एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग थिंग्स, बायोटिक कंपोनेंट्स आपके लिविंग थिंग्स को बोलते हैं, ठीक है, विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, जितने भी लिविंग थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द इन्वायरमेंट्स, सभी क्या है?
biotic components हैं. When we describe them, biotic components, they are again divided into three parts. One is the producers, consumers, decomposers. ठीक है. Producer means which are make their own foods, just like a plants. Consumers which are depend on another organism for their food. They are also characterized, or they are described into three parts. One is the primary producer, secondary producer, and tertiary producers. Okay. And third biotic components are decomposers. When the organism dead, just like a plant animals, they are decomposed through the microbes. That is clear? Okay, one by one we discuss here. नेक्स्ट वन इज द बायोटिक कंपोनेंट्स. इन्वायरमेंट के बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर मेजर थ्री है आपका: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. जस्ट लाइक यू सी हियर, वी आर गिवन हियर सम स्ट्रक्चर्स. लिविंग थिंग्स, बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग थिंग्स, इन्वायरमेंट के जो लिविंग थिंग्स जैसे लाइक ए प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट, ये सभी क्या है? लिविंग थिंग्स है इन्वायरमेंट्स के. That is clear? Okay. First we discuss about the producers. Producer means those organisms which are make their own foods. That is known as the producers. Or all green plants which are synthesize their own food is known as the producers. तो इकोसिस्टम का जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका है प्रोड्यूसर्स. ठीक है. They make their food in the presence of sunlight. क्लियर. सेकेंड पार्ट पर आता है कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स बेस पर, दैट इज द ऑर्गेनिज्म दैट आर डिफाइंड इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द हर्बीवोर्स एनिमल्स. व्हाट इज द हर्बीवोर्स? दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड इट्स प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज द हर्बीवोर्स. ठीक है. जो डायरेक्टली डिपेंड कहाँ हो? प्लांट को, अपने फूड के लिए, तो उसको हम करते हैं हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. जैसे आपका बुफेलो है, गोट है, काऊ है, डियर है, ये सब क्या है? हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं. सेकेंड वन इज द कार्निवोर्स. कार्निवोर्स ऑर्गेनिज्म मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम हर्बीवोर्स एनिमल्स, मीन्स that is depend on the flesh, या which are used for food in the form of flesh. जो फ्लैश मीट के रूप में अपना फूड यूज करे उसको हम कार्निवोर्स एनिमल बोलते हैं. जैसे लायन है, क्रो है, ठीक है, वल्चर है, डॉग है, जैकॉल है. दैट इज क्लियर. विच आर डिपेंड ऑन द फ्लैश. Third one is the omnivores, in which that is the organism they obtain their food from both use, just like a human beings. Both means that is the they are dependent on the plant product as well as the flesh. जो plant product या plant as well as the flesh, मीट पर दोनों पर जो डिपेंड हो अपने फूड के रूप में यूज करता हो उसको हम कहते हैं omnivores, just like human beings, crow. क्लियर. अब कंज्यूमर्स की बात करें तो दैट इज कैटेगराइज इनटू थ्री कैटेगरीज. प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स फर्स्ट जो होते हैं, जस्ट लाइक हम बात कर रहे थे अभी हर्बीवोर्स एनिमल्स. तो हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या हैं? वो फर्स्ट कैटेगरी के हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स से. सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हैं? मीन्स विच आर डिपेंड इन द हर्बीवोर्स एनिमल्स. जो हर्बीवोर्स एनिमल पर डिपेंड हो उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं. टर्सरी कंज्यूमर्स मीन्स विच इज द टॉप मोस्ट. जैसे कार्निवोर्स एनिमल्स हैं. कार्निवोर्स एनिमल्स दे आर डेड एंड डिकम्पोज ऑफ द माइक्रोब्स. ठीक है. या कार्निवोर्स लेवल बोलो तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल पे उसमें भी आपके डिफरेंट कैटेगरीज होती है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज द डिकम्पोजर्स. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स. डिकम्पोजर्स सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं.
अर्थ सरफेस का, ठीक है, बिकॉज दे आर डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। क्लियर। एग्जाम में इस पर बेस पे एक क्वेश्चन आता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज द बोर्ड। यदि देता है कि इफ देयर इज नो डिकम्पोजर आर प्रेजेंट इन अर्थ सरफेस व्हाट हैपन, यदि अर्थ सरफेस पर डिकम्पोजर ना हो तो क्या होगा? एनीवन गेस अबाउट देम? ओके, लिसन। If decomposer are not present in the ecosystems, means the earth surface covered through the dead bodies, पूरे अर्थ सरफेस पूरा डेड बॉडी ही पड़ा रहेगा, ह्यूमन बीइंग, एनिमल बीइंग्स, प्लांट। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट डिकम्पोज, डिकम्पोज नहीं होंगे तो पूरा अर्थ सरफेस ही इससे ढक जाएगा डेड बॉडीज से। क्लियर। सो डिकम्पोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स। डिकम्पोजर में आपका फंगस है, माइक्रोब्स जो आते हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन्स? नो? ओके। नेक्स्ट दैट इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। इन प्रीवियस वीडियो और इन चैप्टर 13 we also discuss about the different components of abiotics: air, water, temperature, solar radiation, soil, organic, inorganic components which are present in the environments. ये सभी क्या है? Abiotic components. Just like abiotic components, that is also known as the non-living things. Just like you see here, water, soil, air, minerals, light, all the components are that is included inside the abiotic components. And all living organisms that is directly and indirectly dependent on the abiotic components. जैसे प्लांट की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, उनके लिए एयर रिक्वायर्ड ही होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फॉर द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट. Water that is also required for the food solubilized inside the bodies, that is the absorption of food. Plant के लिए that is responsible for the absorption of nutrient from the soils. Temperature that is important for the body maintain या growth के लिए required होती है human beings, animals के लिए. But in case of plant that is used for the transpiration. Okay. Solar radiation very important. Light इसको बोलते हैं. Plant that is make their food in the presence of sunlight, and this food that is often that is the uses for the all living organisms. ठीक है, तो that is interconnected to each others. यहाँ देखिए non living things sunlight है, उसके absorb कौन कर रहा है? living things plant. ठीक, प्लांट फूड फॉर्मेशन के प्लांट को यूज कौन कर रहा है? एनिमल्स अपने फूड के रूप में. तो ये एनर्जी एक तरह से यहाँ एनर्जी फ्लो भी चल रहा है, यू सी हियर, एज वेल एज दैट इज आल्सो शोइंग द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. यही क्या है? आपका इकोसिस्टम है. सॉइल, यू नो अबाउट द सॉइल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ए पर्टिकुलर स्पेस फॉर द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट, and they contain the different type of nutrient which are required for the plant growth. Organic and inorganic components which are present in soil, that is also important component for the living organisms. That is clear? Okay. Next one, that is the structure and function of the ecosystems. Interaction of biotic and abiotic components results in the physical structure that is calculated by the characteristics of each type of ecosystem. Okay, the two important structural features of ecosystem. Structural base पे यदि बात कर रहे हैं इकोसिस्टम के, तो there are two important structural features of ecosystems. First one is the species compositions. What is the species composition? It is calculated by the identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem. Okay. And second one is the stratification. What is the stratification? It is the vertical distribution of different species occupying different levels in an ecosystem. Different organisms that is present in different level.
For example, tree occupy top vertical strata or layer of forest shrubs, and second of herbs and grass can occupy the bottom layer. जैसे प्लांट की बात करें हम, तो प्लांट में तीन तरह के प्लांट होते हैं। एक जो होता है टॉलर होता है, जिसको हम ट्री बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो छोटी झाड़ियाँ ग्रोथ करती है उसको हम कहते हैं श्रब बोलते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे जो रहते हैं प्लांट के नीचे स्मॉल प्लांट्स, दिस इज कॉमनली नोन एज द ग्रॉस। तो ये बॉटम थर्ड लेवल का है, बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं। श्रब मिडिल लेवल में होता है, सेकेंड लेयर होता है, और अपर मोस्ट दैट इज द ट्री। क्लियर? द इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर, जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम का, दिस इज डिपेंडेंट ऑन फोर component. First one is the productivity, second one decomposition, third one energy flow, and fourth one nutrient cycling. To understand the concept of aquatic ecosystem, let us take a small pond ecosystem an example. ठीक है, ये आपका मेन फंक्शनल components of ecosystem के productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling we are discussing next video. Okay, here we discuss there is one example of pond ecosystems. Pond is the fairly self-sustainable units that explain even the complex interaction that exist in an aquatic ecosystems. A pond is the shallow water body in which all the above mentioned basic structural and functional components are present. तो pond में abiotic components क्या है? The abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and inorganic materials and soil deposited at the bottom of pond. ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें वाटर था, इनऑर्गेनिक मटेरियल था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल थे, ठीक है, वाटर है। द सोलर इनपुट द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट्स द रेयर ऑफ फंक्शन ऑफ द इंटायर पॉन्ड्स। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स आर फाइटोप्लैंक्टन्स। अब फूड फॉर्मेशन के लिए यहाँ प्लांट क्या है? एल्गी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ओके, सम एल्गी एंड फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड इन द एज। कंज्यूमर्स आर जूप्लांक्टन। यहाँ कंज्यूमर्स क्या है? प्लांक्टन्स है, ठीक है। प्रोड्यूसर में क्या हो गया आपका? फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट हो गए। कंज्यूमर्स में क्या है? कंज्यूमर्स आर प्लांक्टन्स विच आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलर्स। एंड थर्ड वन जो कंपोनेंट था, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स आर द फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैजलेट्स फाउंड abundantly in the bottom of ponds. That is clear? So there is one example that is given here, pond ecosystems. Clear? Pond ecosystem. Okay, you see there is given the pond ecosystem के बारे में डिस्कस कर रहा था, ठीक है। प्रोटोजोअन्स हैं, you see here, ठीक। इसमें डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, प्रोटोजोअन्स, एल्गी, प्लांक्टन्स। सो दिस इज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। दैट इज क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक्स।